Hi, so this video is all about the list of Tata companies which are listed in NSE and which are traded. ये वीडियो में हम लोग टाटा रिलेटेड जितनी भी कंपनीज हैं उसका एक एनालिसिस करेंगे. One of the things which I am lately looking into is all the Tata companies. They are running at tandem and they are running together. तो मैं अभी एक फ़िलहाल एक ट्रेंड देख रहा हूँ कि जितनी भी टाटा कंपनीज होती हैं, जब भी कोई एक टाटा कंपनी रन करती है उसके साथ साथ बहुत सारी टाटा रिलेटेड कंपनीज रन करना स्टार्ट कर देती है. दिस इन दिस वीडियो वी विल टॉक अबाउट विच ऑल टाटा कंपनीज जो मैं देखता हूँ और जो मेरे लिए इंटरेस्टिंग है, जिसमें मैं ट्रेड या पोजीशन से बनाता हूँ. और वी विल डू सम चार्ट एनालिसिस एंड वी आर गोइंग टू सी हाउ आई विल ट्रेड फॉर इन द शॉर्ट टर्म में इसमें कैसे ट्रेड लूँगा. So starting with one, obviously we have TCS. I think TCS looks really good. This is one of the videos which I had posted earlier, which we entered around about 3150 levels, and now you can see it's trading. It went towards 3300 levels. I think one of the biggest factors for the next week would be a monitoring of the 3350 levels, and I think it can easily be breached because it's very near to its all-time high, which is its all-time high. Or going forward, I will make another video about why I think this is the right time for TCS to break its all-time high. मैं आज ही इसको आई एम गोइंग टू पोस्ट दैट वीडियो टुडे इटसेल्फ. मैं आज ही उसको पोस्ट करूँगा. एंड आई थिंक फ्रॉम अ स्ट्रक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू, वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स विच हैपेंड ओवर if you look for a monthly is, this was a video which I posted earlier जो आपको शायद upper right corner में मिल जाए या मेरे playlist में मिल जाए. and this was Tata gave a dream run. और यहाँ पे मैंने positions बनाई थी और theoretically I booked early because of course I didn't want to get stuck in these regions. So मैं तब का जो all time high था उसमें ही मैं ये किया. But one of the things which you have to understand is, एज आई से, कि मैं हमेशा प्रीवियस पैटर्न स्टडी करता हूँ. तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि थ्रू आउट द 2019 टाटा वॉज टेस्टिंग इट्स ऑल टाइम हाई एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. उस टाइम पे जो ऑल टाइम हाई थी उसको बहुत बार ये ऐसा टेस्ट कर रही थी, right? So this actually, and on the top of that you can see the people who made positions over here in this zone, they for a long period of time they made no money. And I think going forward this might also be the case. But given that IT sector is the IT index is looking really good, and there was a huge amount of rollover on IT, and this was exactly the reason कि मैं अप्रैल एक्सपायरी के बाद rollover data study करके मैं यहाँ पे positions बनाए थे. और but going forward we can also have a very similar pattern over here. और अगर ये ब्रेकआउट 3340 लेवल्स को अगर ब्रेकआउट करती भी है, देन आई एम गोइंग टू स्टडी हाउ द डेटा इज़ फॉर्मिंग, और उसके बाद ही मैं ट्रेड लूँगा. थियोरेटिकली आई थिंक गोइंग फॉरवर्ड अभी इस पोजीशन में व्हेन इट्स ट्रेडिंग एट 3280 लेवल्स, वहाँ से अगर आपको सिर्फ एक 50-60 रुपये का विच इज़ 2% ओके. लेकिन मुझे लगता है वी शुड बी, इफ़ यू आर ट्राइंग टू मेक अ न्यू पोजिशंस, मे बी मेक इट अबव ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट. जब वो ब्रेकआउट आएगी आई विल डेफिनेटली ट्वीट, सो फॉलो माई ट्वीट्स. और अगर ये नहीं आई, सो इट कैन वेरी वेल बी कि ये जाके वो 3350 3340 लेवल्स में कंसोलिडेट करे between 3340 and 3360 levels. This is 13th of June, so let's see कि expiry कहाँ पे आती है. So the next company definitely Tata Steel. उसको इसका information और इसका trading हमने last session में लिया, that you will get in the upper right hand corner. सो इसमें भी आपको यही दिखेगा कि हमने टाटा स्टील में किस तरह से पोजीशंस बनाई है. एंड आई वाज एबल टू कैप्चर द स्टील मूवमेंट इंट्राडे में एकदम राइट टाइम पे हम लोग राइट पोजीशंस बनाए टाटा स्टील में और जिंदाल स्टील में, एंड वी मेड सम 4-5% रियली गुड मनी, स्पेशली इन जिंदाल स्टील, क्योंकि वो 400, 11, 12, 14 इस रीजन से 420 रीजन्स. सो दैट वाज रियली awesome money which we made. On the top of that, the third is Tata Motors. I already have positions. I tweeted about Tata Motors in the last session, and it was trailing between 350 and 352 regions में ही पूरा session निकाला. And I think मैंने एक वीडियो पोस्ट किया था लास्ट वीक
जहाँ पे मैंने टाटा मोटर्स के शॉर्ट टर्म एज वेल एज मीडियम टर्म्स एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स रिलेटेड वीडियो किया था. दैट वुड बी अ बिगर वीडियो. उसमें थोड़ा सा लंबी वीडियो है क्योंकि मैं टाटा मोटर्स में इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव और किस रीजन्स में करनी चाहिए उसके बारे में बात किया था, तो वो थोड़ी सी लंबी वीडियो है, वो भी आपको अपर राइट कॉर्नर में मिल जाएगी. सो टाटा मोटर्स इज ऑल्सो वन ऑफ द कंपनीज. आई हैव पोजिशंस राइट नाउ एट 350 एंड आई एम वेटिंग फॉर मोर डिप्स so that I can add more. I would be very much it would be very much be interesting for me to look for the breakout of 360 regions अगर हम वीकली देखते हैं. सो यहाँ पे 52 वीक हाई बनाई थी और फिर ये इट वेंट फॉर अ वेरी नाइस राउंडिंग कंसोलिडेशन विच इज़ गुड. और यहाँ पे वॉल्यूम भी नहीं है, यहाँ पे जैसे वॉल्यूम्स थे. सो आई थिंक गोइंग फॉरवर्ड 360 365 रीजन्स यहाँ पे the chances are very high जहाँ पे ये ब्रेकआउट आ सकती है. एंड आई वोंट बी सरप्राइज्ड. मैं जो टारगेट्स दिया हूँ अर्लियर वीडियो में, सो द टारगेट्स आर स्टिल ऑन. Right. So going forward, these are top 3 companies in my radar. Definitely Titan is also one of the companies जहाँ पे हमने पोजीशन किया है. आज सुबह भी मैंने टाइटन पर on 13th of June मैंने टाइटन का एक वीडियो अभी जस्ट पोस्ट किया जहाँ में मैं टाइटन का एंट्री एग्जिट और क्या ट्रेडिंग स्ट्रेटजी होगी ये मैं डिस्कस किया हूँ. सो आई वोंट डिस्कस इट ओवर हियर. देन द टाटा पावर का भी ब्रेकआउट जो आया था ऑल टाइम हाई में, और सॉरी 52 वीक हाई, और उसको हम लोग ट्रेड किए थे. वो वीडियो भी आपको मिल जाएगी अपर राइट कॉर्नर में, जो हमने पोजीशंस बनाई थी टुगेदर विथ टोरेंट पावर और टाटा पावर. दोनों में हम लोग अच्छा पैसा बनाया लास्ट वीक. और फिर मैंने उस वीडियो में डिस्कस भी किया था कि टाटा पावर का क्या मैं देख रहा हूँ फॉर द नेक्स्ट वीक. सॉरी. और एग्जैक्टली वही हुआ. मैं एक रेंज बोला था और उसी रेंज में टाटा पावर अभी कंसोलिडेट कर रही है. बट गोइंग फॉरवर्ड उसके टारगेट्स क्या होंगे वो आपको उस वीडियो में मिल जाएगी. इंडियन होटल्स इज़ वन ऑफ द कंपनीज आई एम नॉट एट ऑल इंटरेस्टेड एंड आई नेवर ट्रेड और इन्वेस्ट इन इट. और फिर जो एक कंपनी मेरे रेडार में है वो है ट्रेंट. मैं ट्रेंट रिलेटेड बहुत सारे पोजीशंस लिया हूँ. 850 में बुक किया था पहले, अभी वो 870 रीजन्स में है विच इज़ ऑल टाइम हाई फॉर ट्रेंट. देयर इज़ अ वेरी गुड बाइंग हैपनिंग इन ट्रेंट एंड आई वुड डेफिनेटली बी वेरी मच इंटरेस्टेड इन टेकिंग मोर पोजीशंस. ये पहले 920 940 रीजन्स में ऑल टाइम हाई बनाई थी, हम लोग यहाँ से पकड़े थे शायद, और फिर टूवर्ड्स इट मेड अ वेरी नाइस कंसोलिडेटिंग डिप. यही एग्जैक्टली दिस इज़ द पैटर्न. एज आई से ऑलवेज स्टडी द प्रीवियस पैटर्न. ये जब यहाँ पे बनाती है और ऑल टाइम हाई में आती है, फिर एक अच्छा डिप आता है. सो आई थिंक गोइंग फॉरवर्ड मे बी 9 अभी 873 है. एंड आई थिंक गोइंग फॉरवर्ड आई थिंक दिस इज डेफिनेटली आई एम गोइंग टू एंटर एग्रेसिवली इफ इट ब्रेक्स द 880 रीजन्स. एंड दिस इज एग्जैक्टली one of the companies I'm very much interested in. Especially everything is going good in the favor of the company. First of all, ये टाटा का company है. Second of all, this is more about which has a direct link with coronavirus and the coronavirus lockdowns getting relaxed. So आपको ये समझना है, a stock runs not just because of the tailwinds from fundamentals and सो व्हाट्स मोर इम्पॉर्टेंट, जो सबसे इम्पॉर्टेंट होती है कि मार्केट इसको कितनी वैल्यू दे रही है. क्योंकि फंडामेंटल्स बहुत सारे कंपनीज की अच्छी होती है, लेकिन मार्केट उसको अगर वैल्यू ना दे तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है. गिवन वी ट्रेडेड दिस ब्रेकआउट. अगर आप ट्वीट्स देखो सिंस मार्च, मैं ट्रेंड में बहुत पहले से हूँ और अभी आई बुकड आउट राउंड अबाउट 900. फिर वो बहुत सारे अच्छी कंसोलिडेशन करके ये ब्रेक डाउन आया और आई वाज स्टिल वेटिंग फॉर 800 लेवल्स. यहाँ पे हमें वेट कर रहा था 800 वाज हियर, राइट. 800 या एग्जैक्टली इस लेवल्स पे कंसोलिडेट किया, फिर ये ब्रेक डाउन आया. एंड नाउ आई थिंक दिस इज ऑल्सो गोइंग टू गिव अ वेरी गुड इंटरेस्टिंग इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी. बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट के लिए दे सकती है, ट्रेडिंग के लिए. आई थिंक वन ऑफ द थिंग्स आई वुड बी इंटरेस्टेड इन इफ इट डिप्स बिलो 840 850 रीजन. वहाँ पे मैं स्टडी करूँगा कि ये किस तरह से बिहेव कर रही है. बट गिवन द मोमेंटम यू कैन सी इट्स मेकिंग हाई एंड हाई लोज. बट आई थिंक मे बी अगर सीरियस एक मनी बनानी है, if you want to make really good money, I think we should be waiting for a dip towards 840 and towards 820 region. और वहाँ पे जब आएगी फिर मैं सिप करना स्टार्ट करूँगा. when I say sip I mean I will go for some
10-15% of a fund I will deploy in these regions. 10-15% of the money I want to invest in Trent or I want to trade in Trent, उसका जो 10-15% होगा, 20% होगा, वो मैं 840 और 820 और 800 regions में distribute करूँगा. So यहाँ पे मेरा 60% positions बन जाएंगी, and then I would just look for when it goes above 900. So in this way I will have a very good 60% in this region and the 40% over here. I am very much confident in a very short time, if the sentiment of the market remains the same and there is no such bigger problems which pop in terms of सेंटिमेंट अगर सही रही, मुझे लगता है ये डेफिनेटली 940 को भी तोड़ के 1000 के ऊपर चली जाएगी. दिस इज़ वन ऑफ द बिग गुड कंपनीज विच आई थिंक, एंड इफ़ यू लुक इनटू very long term, this is what I always say for any investor or any trader who is actually thinking about investing some big money. And you see that since 2014-15 ये एक बहुत अच्छा एक ड्रीम रन दी थी. This was the dip which happened due to corona, and now it's trading above it. So these are one of the very strong pointers जो देती हैं कि इस कंपनी में बहुत अच्छी इंटरेस्ट है, and maybe going forward this would be one of the things I would be looking into. So now let's have a look, and so we have already discussed Trent. Tata Steel products. So one of the कोई मुझे पूछा था कि मैं टाटा स्टील प्रोडक्ट्स में क्यों पोजीशन लिया हूँ कि नहीं, वो भी आपको ट्वीट पे मिल जाएंगी. और मेरा आंसर यही था कि अगर टाटा स्टील में ही लेना है तो टाटा स्टील में लो. व्हाई यू वांट टू गो फॉर दिस लॉन्ग प्रोडक्ट्स जस्ट बिकॉज ये लोग मतलब just because they are cheap. But for me, if you are looking for a really good investment, or Tata BSL में भी पूछे थे, I'm not at all looking for those companies. अगर मुझे स्टील सेक्टर में रहनी है, I will stay with Tata Steel. As I always say, स्टील सेक्टर में मेरे लिए टॉप 2 है Tata Steel and JSW Steel. I don't actually, there's a lot of value in sale, I do understand. और अगर कोई इन्वेस्टमेंट करे, so maybe sale will turn out to be one of the best which gives return. But since this is a PSU, so there are a lot of other headwinds which can come in. But Tata Steel, I have full faith in Tata Steel. The market has full faith in Tata Steel. I want to be in that one. So और एक कंपनी जो मैं बहुत इंटरेस्टिंग है for me is there's okay, I'm not interested in Tata Coffee, and I will discuss very briefly Tata Consumer and Tata Communications very briefly. Or given another company is Tata Elxsi, and I am very much looking forward for Tata Elxsi for the next week, that is on the week of from 13th to 20th, or from 14th to 21st. This is what I'm looking at for the third week of June. The reason is IT looks really good, and with the IT, this is one of the mid-cap companies which is making really good moves, and it's been one of the wealth creators. जो भी किसी का wealth create करता है, they are one of the things which the market always, जो भी short term में run करते हैं, उनके dips में हमेशा buy आएगी. That's a sort of because there's a lot of money. Here you can see there was a huge volume when this particular move came, and we were there in the Tata Elxsi, and then it consolidated very nicely, और फिर ये breakout आया. This breakout gave really good money for me, and it was around about, I remember, 1,000 rupees for an investment of 3,000 which I made round over here. From 3,000 it went to 4,000, and this is one of the Tata Elxsi would be one of the companies which will be in my radar. I would enter aggressively above 3916 levels, definitely, or one of the in a short term, agar IT is one of the sectors which will be moving, I would say that Tata Elxsi will also take part in it. हम लोग Mindtree में भी ट्रेड किए थे, LTTS में ट्रेड किए थे, LTI में ट्रेड किए in the last week, और इस सब की वीडियोस आपको अपर राइट कॉर्नर में मिल जाएंगी, जो डिस्कस करती हैं कि मैं किस लेवल्स पे देख के उनमें किस पैसा बनाया. I will post another video which will be explicitly for IT just in the next 1-2 hours. वीकेंड में ही मैं इस वीकेंड आज ही पोस्ट करूँगा. So there I will discuss more about what are the IT companies which I am looking for the next week. And going forward, let's have a quick look into Tata Consumer and Tata Communication. Basically मैं Tata Consumer से निकल गया हूँ, and this is near all-time high, and it has given a good run. And one of the things I am very much skeptical about, और जो मैं ये कहता हूँ कि जब भी इतने सारे green candles आती हैं on, we are looking for a monthly chart, then theoretically there should be some correction which I am waiting for, and this was actually one of the very good corrections you can actually ask for. और ये हुआ था मार्च में,
where you see, and also corrections like this, but I think going forward, अगर market sentiment में अगर थोड़ी सी भी कुछ change हुआ, and if people start booking out, so I think Tata Consumer can easily retest this 680 breakout levels. I don't have any positions right now, and I think I think going forward I would be studying it more rather than putting money into it and इन्वेस्टिंग, क्योंकि टाटा कंज्यूमर जब भी ऊपर आती है फिर उसमें कंसोलिडेशन फेज आके फिर वो ऊपर जाती है, बट दिस टाइम यू कैन सी इट्स जस्ट गोइंग अप एंड इट ऑल्सो गेव अ वेरी गुड डिविडेंड. सो आई थिंक गोइंग फॉरवर्ड मे बी द मार्केट विल, if any weakness in Nifty comes in, it may correct towards 680, and then we are going to study of how this looks like for whether we should enter then and now, right? So one of the problems I see is in structures like this, because you see when a structure like this comes, then it enters into a consolidation and then it dips, and when it dips, this is the interesting study which I can do, because you see there was a huge dip and there was a huge volume, but which actually says that there are a lot of buyers interested, and then you see the level it closed, it just kept on working. So अगर मुझे 630 regions से अगर मैं enter कर पाता, which I didn't unfortunately at this point of time because I booked out earlier, और अगर मुझे वो levels फिर से मिले, in the sense if I get not levels but same pattern मुझे मिले, so maybe Tata Consumer would be something, but I think this is going to maybe fly to 750 and 750 levels. No matter what, I'm not very much interested in Tata Consumer for now, और Tata और एक जो company थी Tata Communications, दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द कंपनीज जो वेरी नियर ऑल टाइम हाई है. यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि किस तरह से ये वेरी गुड कंसोलिडेशन की बिटवीन 1150 एंड 1044. दैट वाज 100 पॉइंट, and now going forward it would be very much interesting to see how it behaves over 1320 levels, which is very near. So I think going forward maybe it will have some selling और सम रेजिस्टेंस. डेफिनेटली अगर ये 1330 1340 लेवल्स के ऊपर चला गया, सो आई वुड बी देन very much interested, and वहाँ पे मैं momentum trade लूँगा. But no matter what, I think it has given a very good, so you can see it was round about this levels. It has always faced. Let me draw a line. Yeah, over here in this particular zone. सो ये अच्छे से कंसोलिडेटेड, फिर एक डिप आया और फिर डिप में बाइंग आके ये एक ब्रेकआउट दी. सो मे बी गोइंग फॉरवर्ड, if you look into sort of these patterns, I see there is also no volume. So maybe if it runs, it will run because of the market sentiment or the sentiment of it being a Tata company. But I don't see much of an advantage until and unless 1340 levels breach होके अच्छे से मूव करती है. Till then I will wait for dip, and if it dips below 1200, that would be awesome to study, and then we can take further decisions. So no matter what, Tata Communication और जो हमने just इसके पहले ही डिस्कस किया कि टाटा कंज्यूमर, ये दोनों में मैं अभी इंटरेस्टेड नहीं हूँ. रादर आई वुड बी वेरी मच ट्रैकिंग टाटा स्टील. टाटा स्टील का मैंने वीडियो बनाया था, एंड आई विल ऑल्सो ट्राई टू पोस्ट अ वीडियो ऑफ व्हाट आई थिंक द स्टील सेक्टर विल डू इन द नेक्स्ट वीक, विच आई एम गोइंग टू पोस्ट over the weekend. आज ही मैं पोस्ट करूँगा. और definitely I have carrying positions for Tata Motors, and TCS is also something which I already discussed, and maybe I will discuss in another IT specific video which I'm going to make, where I'm going to discuss how I am looking into IT. So that's all. Thanks a lot. Hopefully ये आप लोगों के लिए interesting रहा. So I think one of the patterns I am seeing is जब एक टाटा कंपनी चलती है तो और एक कंपनी उसके साथ भागती है, and I am very much it would be very much be interesting to see how companies like Tata Elxsi especially works over the next week or 2 weeks before this June expiry. So that's all from my side. Thanks a lot for listening.